This love story built an empire from 0 to 4,000 crores and received investments from the likes of Ratan Tata. इन्होंने पैसे कैसे कमाए? हमें पैसे वापस देकर। अब तक कैश करो ने 5,000 करोड़ से ज्यादा की सेविंग्स लोगों के लिए एनेबल की हैं। नमस्ते भारत, मैं हूँ त्वषा तुली और ये है स्टोरीज फ्रॉम भारत। आज हम एक ऑर्डिनरी डे स्पेंड करेंगे विद द एक्स्ट्राऑर्डिनरी फाउंडर्स ऑफ कैश करो, Rohan and Swati Bhargava, right here in Gurgaon. We learn about their morning routines, their childhood stories, the craziest thing they did in college, their exciting love story and most importantly, how they built a multi-million-dollar empire. इससे आप भी सीख सकते हैं how to set yourself for success. तो आइए चलते हैं उनके घर में and देखते हैं how they start their morning routine. Let's go. I usually wake up anywhere between 5 to 5:30 in the morning. I do about 10 minutes of meditation. I am now ready to hit the gym. At this point, Swati was already up. So the first thing I do in the morning is मैं coconut oil pulling करती हूँ, जिससे it really helps in the oral hygiene, helps pull out bacteria from inside. अब अपनी morning routine का next phase is going to the gym. Mainly going to focus around a lot of push-ups, pull-ups, some bit of cardio. I do a training of mixed martial arts. So it's a mix of kickboxing, boxing, takedowns, grappling and a few other things like that. कोकोनट ऑयल पुलिंग के बाद मैं रोज अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिखती हूँ। इसमें इज अ लिस्ट ऑफ एफर्मेशंस, मतलब थिंग्स दैट आई वांट इन माय लाइफ एंड आई वांट टू पुट इट आउट देयर। एंड उसके बाद आई डू सम योगा एंड स्ट्रेचिंग। So I'm now ready for the day. And now that we're at the breakfast table, let's delve into Rohan and Swati's childhood, exploring the origins of their love story. I think growing up, I was able to balance being good at studies, but also not being a bookworm. I grew up in Ambala and हमारे घर जो है वो जैसे 2-story independent house था अम्बाला में, अभी भी है. And when I think back growing up, I think our choices were limited, right? I think back then there was medicine करनी है, engineering करनी है. My father, was an engineer from IIT. All my childhood memories of my father are that I've always seen him as an entrepreneur who has built a business with real profits, जिनसे हम सब लोग बड़े हुए हैं, बाहर पढ़े हैं, हमारी lives चली है. So I was always very inspired by him. So this was back in 1999. So IITs would take only about 2,000 kids at that point. But I was very confident, right? Through all the exams that I was doing, I was in the top tier. When the results came out, I didn't make it, right? And honestly, I think even till date, that's probably been my biggest setback. We've done a lot since, but that first setback really hit me. It took me a while to kind of figure out what next, because I had not applied for anything else. I had my IT JEE exams. After class 10, I applied for this Singapore Airlines scholarship. And उस समय काफ़ी डाउट था माइंड में कि क्या अम्बाला की लड़की इंडिया के टॉप 25 लोगों में आएगी to be able to get that scholarship. But I still applied and after clearing all the rounds, I actually got that scholarship. अगर कोई भी small town में है तो उनको ये कभी सोचना नहीं चाहिए कि हम कुछ नहीं कर सकते. I think जो लोग hard work कर रहे हैं, जो genuinely चाहते हैं, और आजकल इंटरनेट पे तो बहुत सारी facilities available हैं, इतनी सारी classes हैं जो आप online कर सकते हैं. Sometimes you don't know how a setback can be some of the best things that happen for you. I think they say कि in every adversity there is a silver lining, and if you can find the silver lining, magic happens. It so happened that a senior of mine had gone to a college in the US. Instead of going to, a school or college in India, I ended up, very unexpectedly going to the US. Because this setback happened, it opened up a new door. I ended up going to the US. From the US, I transferred to the London School of Economics. London School of Economics में apply किया तो मुझे वहाँ पे admission मिली. That's when we first met. तो LSE में मेरे जो कुछ फ्रेंड्स थे वो रोहन को जानते थे, तो एक दिन उन्होंने मुझे बोला कि हम वैसे ही लंच के लिए जा रहे हैं एक सीनियर के घर जो बहुत अच्छी दाल और भिंडी बनाता है. तो मैंने कहा यार ये सीनियर कौन है, और फ्री फूड फॉर एन इंडियन स्टूडेंट, फ्री इंडियन फूड दैट ऑल्सो. आई वाज लाइक मैं भी चलूँगी. तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ एक
सीनियर के घर पहुंच गई, जो सीनियर रोहन था. We were friends, right? And we had a lot of common friends. So when I started working, that's when we started to get to know a little bit more of each other. तो उनके एक फ्लैट में कम से कम 20-25 इंडियन स्टूडेंट्स थे जिनके लिए रोहन ने खाना बनाया. वो सब उसके फ्रेंड्स ही थे, ऑफ कोर्स. When Swati was finishing her college, she was looking for a place to stay. I had found a 3-bedroom place, and I was also looking for flatmates. So interesting enough, Swati and me first got together as flatmates. So there were 2 friends of LSE from her batch, me. We all started living together and we were actually flatmates for 3 years. Nothing happened. We were just friends. And then towards the end of those 3 years, I remember my parents were saying, you're like 25, 26, so let's start looking for a boy for you. Along the way, we sort of realized that, we do like each other. And dhire there is a story that developed. 3rd year ke baad, having stayed together, I think we both realized we liked each other. I knew कि रोहन liked me sometime. तो मैंने थोड़ी हिंट्स ड्रॉप करनी शुरू करी. फटाफट उसने हिंट्स उठा भी ली. एंड देन वी स्टार्टेड डेटिंग. एंड देन वंस वी स्टार्टेड डेटिंग, विद इन 3 months वी वर एक्चुअली रेडी टू गेट मैरिड, बिकॉज हम जब फ्लैटमेट्स रह चुके थे इतना टाइम, तो वी ऑलरेडी न्यू ईच अदर सो वेल. I would always say look for somebody who's got a kind heart, somebody who respects others. आपस की म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है, नॉट ओनली फॉर अ रिलेशनशिप लाइक आवर्स जहाँ पे हम काम भी इकट्ठा करते हैं, इकट्ठे रहते भी हैं, बट आई थिंक इन एनी रिलेशनशिप, बिकॉज व्हेन देयर इज रिस्पेक्ट देयर इज लव. Twenty years ago, I was diagnosed with a kidney problem. 2022 mein, it was basically, going really down, and the doctor told me that you need a transplant. And I'm lucky that I found a donor in my house. My mom was willing to donate, and she was also a good match for me. 2022 mein, अपना फंड रेज कर रहे थे सीरीज सी का. सुबह मैं पिच कर रही हूँ और शाम को मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, या वाइस वर्सा. एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक it's okay, like I was never worried because I knew that the universe has my back. तो अब thankfully it's been about 15-16 months, 1.5 साल हो जाएगा 2-3 महीने में, and it's all gone well, and I couldn't be more grateful for my family's support, for Rohan of course, who's been a rock. Believe that things will be fine, and then they will be. Well, there are always some things to take care at home. So before I head out to work, I always discuss with the cook, lunch के लिए क्या बनेगा, what is Rohan gonna have, what am I going to have. I think Gurgaon is a really exciting place to be doing a startup. In fact, Bangalore and Gurgaon are 2 largest hubs, right? So especially when I get to office now, you'll see on the way we're going to cross Huda City Centre Metro. And outside that metro station, it's like so many people are there. They're coming from all different parts of Delhi to work in Gurgaon. And I feel that there's just so much energy and excitement here that it's truly fun to actually be building a business. We did the same in UK, and I think the energy in United Kingdom, England, London, any of those versus Gurgaon is like not even half. तो अब हम पहुंच गए हैं कैश करो ऑफिस, तो आइए आपको अंदर दिखाते हैं. By the way, here we've put some of our memories, and you haven't seen the Cash Karo office yet, so let's go do a quick tour. हमारे 2 floors हैं actually इस building में, ground floor and the second floor, and here's our workspace. This is the floor, so we have a lot of seating here and quite generous desk space, as you can see. So all our meeting rooms are named after sports people. So we've got Sachin, Serena, Jordan, Bolt and Com. And Nietzsche also we have them. That, by the way, is my desk. Oh, hi. So in case you're wondering where Swati and I sit, this is my desk. Since the start, we were very clear that we wanted to build a culture, build a company that is built on a flat hierarchy. So as a result, nobody in Cash Karo has a cabin, nobody has their own office. More than that, I think by being on the floor, you really get a sense of what is happening in the company. It's a great way to bond with your team, your colleagues, who are also some of your best friends.
We just love the energy of the floor, and that's why we are here. It's 2 p.m. now. रोहन और साथी अब कुछ लंच लेने जा रहे हैं, जहां हम उनसे लेंगे कुछ टिप्स एंड इनसाइट्स on how to build a multi-million-dollar company from scratch. Hi, I'm here to extend your lunch break. You can thank me later. My first question for you would be, why entrepreneurship? So, you know, when Swati and me were in London, I think we had both been working in financial services. And at least for me, I think I'd reached a point where I'd stopped having fun. So I think that was one factor, right? Which was a signal that, look, you need to do something of your own, or you need to find a different career. You also get to a point where you feel that, look, I would love to be able to control my own destiny. And nothing allows you to do that better than entrepreneurship. And that was exciting, right? And I think, both Swati and me had that comfort that, agar ye nahi hoga to, we'll be able to get back to a job, right? I think we had built enough credibility and confidence that there is some foundation at least. So I think that's where entrepreneurship happened, and we've been doing it now for 12 years. Not regretted one day. So right now, a lot of people, especially in my generation, are choosing to not work, not take up corporate jobs, and right away after college or probably drop out of college to start something of their own. What is your take on that? Sometimes I get messages from people saying, ma'am, I really want to do my own startup. Do you have any idea? I'm like, and then sometimes students actually say that they also ask this question कि 12th के बाद हम कॉलेज के बाद हम सीधा स्टार्टअप अपना बिजनेस करें या कोई जॉब करें, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? And I think in our case what we learned is that our jobs definitely gave us good foundation skills, right? Because I was at Goldman, Rohan was also in asset management, and in his world as well and mine, we both learned presentation skills, communication, Excel. We became really good at structured execution and structured learning, and that gave us good foundation. That even today, like I was telling you before, we have a good L&D program at Karo. A lot of it is because we feel that these fundamental skills help you. At the same point, I'll give you enough examples of incredible entrepreneurs, Bill Gates, Zuckerberg, and many, many more, right? But I think work experience helps. It gives you a certain foundation. It gives you an understanding of the corporate world. Mm-hmm. It gives you attention, lots of little training points, right? Where it helps. The startup journey is much more difficult than it looks. Yes, it's enriching. We're learning every day, but it takes a lot of hard work. It takes a lot of sacrifice. And जो startups end में succeed करती हैं, वो वही हैं जिनको आप इतना ज़्यादा hard work कर सकते हो लंबे समय तक consistently. आप में से कोई भी अगर अपनी startup launch करने की सोचें, तो हमेशा परफेक्शन की वेट करना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो परफेक्शन करते करते ना बहुत लेट हो जाता है. एंड आप अगर एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट जिसको कहते हैं कि वो गुड इनफ है टू लॉन्च, तो कर दो, क्योंकि करने के बाद जितनी लर्निंग्स आएगी ना, उससे आप जो चेंजेस करोगे उसमें आपका टाइम लगे, वो बेटर है ना कि शुरू में ही बिना कुछ लॉन्च करे उसको करे गए, पता भी नहीं वो सही भी ठीक कर रहे हैं कि नहीं, सही और गलत भी नहीं पता एक्चुअली. That's amazing. But what made you come back to India? What's the story behind that? Before we finally made the decision, Swati and me would spend, maybe 4 months, 3 months in India. And honestly, India ki vibe, aaj bhi, is so special. India is eager, hungry to do business, right? And aaj ki date maybe you can reach the largest of entrepreneurs. The budding entrepreneurs are very eager. And jahan par bhi jao, people are कुछ करना है, right? Hungry for business and up for business. ये नहीं कि अभी वो 6 बज गया फोन मत करना. Like ठीक है, everyone respects each other's boundaries, but people are up for business. But we're talking more about the general hustle of the country and the energy, right? And इसलिए आज अगर हम इंडिया में देखें, there are so many problems to solve. बहुत सारे इंडिया में बड़े businesses अभी बन सकते हैं, जो हमें 1-2 दिखते हैं, 10 साल बाद वैसे और होंगे या और क्या क्या चीजें होंगी ये भी नहीं पता. There are lots of problems to solve in India. Now we have the $1 million question. Cash करो, cash कैसे कमाता है? Yes, exactly what I was saying. इसका जो business model है वो ये है कि जितनी भी ये e-commerce sites हैं उनको हम ट्रांजैक्शन ड्राइव करते हैं, हम उनके मार्केटिंग पार्टनर हैं. सो हर ट्रांजैक्शन के लिए वो हमें कमीशन देते हैं. उस कमीशन में से हम अबाउट 75% जो है वो एज कैशबैक यूजर को दे देते हैं, और बाकी 25% जो रखते हैं दैट इज आवर मार्जिन. सो फॉर समवन, लेट्स से an 18-year-old entrepreneur, right? That person is looking to raise funds. How will they do that? सो बेसिकली एंजल इन्वेस्टमेंट क्या है कि जब आपको अपने बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट रेज करनी हो, मतलब कि आपको लोन नहीं लेना है, आप अपने शेयर्स के अगेंस्ट पैसे लेना
करना चाहते हैं। तो अगर आप नॉर्मली अपने किसी फ्रेंड से बात करें जो आपको पता है कि काफी पैसे वाले हैं और वो इन चीजों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं हम अभी नहीं इतने, बट फिर भी तो अब आप उनसे फ्री के पैसे तो नहीं लोगे ना। आप कहोगे कि ठीक है आप मेरी कंपनी में एक स्टेक ले लो, मतलब मेरी कंपनी में आप लेट्स से 4% आपको मैंने दे दिया, उसके अगेंस्ट जो मेरी कंपनी की वैल्यूएशन है, जो हमें लगता है कि आज इसकी वैल्यू है, उस हिसाब से आप मेरे को पैसे दे दो। तो वो आपस में एक अग्रीमेंट हो जाता है। तो जैसे हमने जब अपना एंजल राउंड किया था, तो जो हमारे LSE के फ्रेंड्स थे, गोल्डमैन सैक्स के कोलीग्स थे और फाइनेंशियल इंडस्ट्री में जो लोग थे जिनको हम जानते थे, हमने उनसे पैसे रेज किए। मतलब उन सबके पास आज कैश करो कंपनी के शेयर्स हैं और हमने उस समय उनसे पैसे लिया जिसको लेके हमने ग्रो किया। नाउ उसके ऊपर आता है आपकी वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनीज, राइट? जैसे इन आवर केस कलारी इज एन इन्वेस्टर। नाउ ये लोग क्या करते हैं कि दे हैव रेज्ड अ फंड फ्रॉम it could be insurance companies, pension funds, etc. So they raise an amount of money and they are investment professionals that will pick companies to invest in. And so now there are many Series A companies. So Series A होता है कि और first venture capital round is called the Series A round. जो हमारे केस में कलारी कैपिटल ने किया था इन्वेस्ट। So lot of those folks are there. So I think this allows you to raise anywhere between a few crores to as much as 70, 80, 100 crores also. सी मेरे हिसाब से जब इन्वेस्टर्स एक कंपनी को स्टडी करते हैं, वो मेनली 5 चीजें ढूंढ रहे हैं। पहला ये कि आपका बिजनेस कितना बड़ा हो सकता है, व्हाट इज द मार्केट साइज। So if you have a large addressable market, then chances are if you execute well, if you're a good team, you will build a large business. Second is that what is the traction that you have so far. मतलब हम बिल्कुल आइडिया पे तो रेज नहीं कर रहे, अभी तक आपने जो बिजनेस बनाया उसमें कैसी प्रोग्रेस है। थर्ड इज कि उस बिजनेस के यूनिट मेट्रिक्स कैसे हैं, मतलब ऑन ईच ट्रांजैक्शन क्या आप पैसे कमा रहे हो या आपका बिजनेस मॉडल ये है कि नहीं मैं तो अपनी तरफ से ही पैसे दे रहे हूँ। जैसे कई लोगों को लगता है कि शायद कैशबैक है, बट कैश करो का बिजनेस मॉडल वैसा नहीं है, जिसकी हम बात करेंगे। तो वो यूनिट मेट्रिक्स क्या है, राइट। एंड फोर्थ इज की टीम कैसी है आपकी, क्योंकि अगर कोई इतने पैसे आपको दे रहा है तो सिर्फ फाउंडर्स पे तो नहीं लगा सकते। टीम जितना आई ऑलवेज बिलीव दैट द बिगर योर ड्रीम द मोर इम्पोर्टेंट योर टीम, बिकॉज जितनी बड़ी आप चीज करना चाहते हैं उतनी ही आपको हेल्प चाहिए होगी। एंड फिफ्थ इज ऑफकोर्स द फाउंडर क्वालिटी, राइट, बिकॉज अगर फाउंडर्स केपेबल ना लगे इन्वेस्टर्स को तो फिर वो पैसे नहीं उसमें डालेंगे, क्योंकि इनिशियली जो भी पैसे हम रेज कर रहे हैं इट इज ऑन आवर ओन our own guarantees, our own effort, our own we have to impress the investors. business है जो founders present कर रहे हैं। तो ये 5 चीजें आई थिंक हमेशा होनी चाहिए। प्लस जब भी आप किसी भी मीटिंग के लिए जाएं, अपनी पूरी रिसर्च करें, मेक योर डेटा इन ऑल ऑल द रिपोर्ट्स दैट यू नीड, मेक योर बिजनेस मॉडल्स, नो योर नंबर्स। इट्स वेरी इंप्रेसिव व्हेन यू टॉक टू अ टीम हु नोज द नंबर्स। हर बात पे अगर आप बोलेंगे ओ ये तो मैंने कैलकुलेट नहीं किया, ओ तो क्या आपने उस चीज के बारे में सोचा भी, देन हाउ विल यू गिव कॉन्फिडेंस टू द इन्वेस्टर्स। So I'll double click on the idea of a founder being capable, right? Yeah. So one scenario is someone who's like you, who has like an amazing educational background, job experience, but for someone who does not have that, how do you evaluate his capability or ability to run a good business? Yeah, see, pedigree is not everything, right? And we have so many examples of people जिन्होंने बहुत अच्छे businesses build किए हैं, but education में हो सकता है कि वो institute का हमें नाम ना पता हो इतना, लेकिन it is about the, see, at the end of the day, whether the founder is coming from whichever college, you still need to have a vision for your business. You still need to know कि what are your numbers going to be like, how will you execute, that execution plan is key. So if an investor sees कि okay, founder के पास वो सब जवाब है, वो सब प्लान है, उनकी अपनी हसल और एनर्जी इतनी ज्यादा है कि मतलब उनके अंदर की ड्राइव ऐसी है कि चाहे जो भी हो जाए मैंने तो ये करना ही है, वो वाला एक इम्प्रेशन आना चाहिए मीटिंग में। अब चाहे आप किसी भी कॉलेज के हो, तो इसीलिए वो कॉलेज का फर्क नहीं पड़ता, बट उस मीटिंग्स में आप अपने आप को कितना उस ड्राइव को प्रेजेंट कर पाते हो वो बहुत जरूरी है। आई थिंक दैट्स द ओनली थिंग दैट मैटर्स, बिकॉज लुक, योर पेडिग्री विल गेट यू टू maybe the interview or maybe get you in front of the VC or the right angel, but after that it is down to your idea, and उस idea में कितना दम है and आप में कितना दम है is the only thing that matters. Pedigree is many things that drive it. Now to summarize our conversation for an 18-year-old looking to start up, how would you summarize that? What baby steps should that person take to build their company? Look, I think for most things, right, my principle has been you got to have a very clear dream, right? You got to then believe in it. So your idea, you have a dream कि ये बन सकता है, then you got to believe that ये किसी भी हाल में हो जाएगा,
The third step, which is probably the most important and the hardest and the longest, is you have to work hard. I think koi bhi, whether you're a successful actor or a cricketer or an entrepreneur or any field, right? They have all achieved it through these three things in some shape or form. So I think anyone who's listening to this, anyone who has that big desire, if you kind of hold on to these three things, I think it'll happen for you for sure. In summary, it's dream karo, believe karo, kaam karo, फिर cash karo. Yeah, exactly. That's true. That's true. Yeah. I'd also just say that hard work है बहुत ज़रूरी है, but make sure that in that journey you also balance your health and you also find time for yourself, because entrepreneurship एक sprint नहीं है, it's actually a marathon, right? तो आपको अंदर वो stamina बनाना है और आप वो रेस तभी complete करते हो अगर आप भी ठीक होने चाहिए ना, सिर्फ business तो फिर क्या ही फायदा. So that is really important. So make that plan. And the other learning that I think, I personally feel is that, there is importance to initial planning. अदरवाइज हमें दूर से आइडिया अच्छा लगता है, हम दो लोगों से बात करते हैं, दो ऑनलाइन आर्टिकल पढ़ते हैं, रिसर्च हो गई, शुरू कर लेते हैं. लेकिन यहाँ उसमें और भी ज़्यादा है. बाहर ये आइडिया हुआ है, कैसा हुआ, आगे व्हाट ऑल वर देयर प्रोज एंड कॉन्स, हु एल्स इज डूइंग इट इन इंडिया, हाउ एल्स विल यू ग्रो इट. देयर इज एक्चुअली मेरिट टू डूइंग फाइनेंशियल मॉडलिंग. एंड अगर आप बिजनेस शुरू कर भी चुके हैं ना, विच इज़ ग्रेट, तो आप अपने फर्स्ट ईयर का भी एनुअल प्लान बनाइए. बिकॉज व्हेन यू हैव दैट गोल, जैसे आज हम लोग मिड फरवरी में हैं, एंड ऑफ मार्च में ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है, वी हैव अ रेवेन्यू टारगेट ऑल ऑफ अस, राइट? इफ वी weren't डूइंग एनी टारगेटिंग एंड मॉडलिंग, तो वी वुडंट हैव दैट. बट क्योंकि हमें पता है कि यार 45 डेज बचे हैं इस टारगेट को अचीव करने के लिए, सब एक अलग ही ड्राइव से काम करें, एंड इसलिए वो गोल्स होना बहुत ज़रूरी है. गोल्स को लिखना बहुत ज़रूरी है. सिर्फ माइंड में सोचना इज़ नॉट इनफ. राइट इट ऑन पेपर, शेयर इट विद योर टीम, मेक इट अ शेयर्ड गोल, then only it gets achieved. And our final question, how does it feel to be a millionaire? I don't know if we are that, but I do think that, with all the love that we've got from millions of people, उस हिसाब से millionaire हैं हम. And it's also the impact, right? अब तक कैश करो ने 5,000 करोड़ से ज़्यादा की सेविंग्स लोगों के लिए enable की हैं. 5,000 करोड़ is a lot. Actually, every year हम लोग 4,000 करोड़ 4,500 करोड़ हमने लास्ट ईयर किया ऑफ सेल्स दैट वी हैव गिवन टू पार्टनर्स, राइट? सो दैट इज अ गुड कंट्रीब्यूशन टू पार्टनर्स ऑल्सो. इट्स गुड कंट्रीब्यूशन टू द अर्निंग्स दैट पीपल आर डूइंग वाया कैश करो. तो उस टाइप का जो इम्पैक्ट लोगों की लाइफ में क्रिएट हो रहा है, उसको तो मतलब देख के ऑब्वियसली वी फील ग्रेट. एंड आई थिंक एक एंटरप्रेन्योर ट्रेट ये भी है कि आपको हमेशा लगता है कि अभी तो शुरू हुए हैं, अभी तो बहुत है करने को काफ़ी. Absolutely, I think 12 साल हो गए. And honestly, when I look at कि हम कहाँ तक पहुँच गए हैं और कहाँ पहुँच सकते हैं, I feel like अभी तो शुरुआत ही है. It's Robert Frost line, no? Miles to go. Miles to go. Exactly. Yeah. So thank you so much for your time, and you're welcome for extending your lunch break. Lunch is over. We have a meeting to get to now, so you're welcome to join us. अब हमारी लंच पे चर्चा के बाद रोहन और स्वाति ने एक टीम मीटिंग एड्रेस करी, which was followed by an office celebration. Love is obviously in the air, even in the office. Swati surprised Rohan with a Valentine's Day surprise. Okay, I've changed, and I know Rohan's gonna be like, "What? Changing in the middle of the work day?" After the Valentine surprise, Swati went on to take a job interview. जैसा हमें स्वाति और रोहन ने पहले भी बताया था that as founders they spend a lot of time in hiring. Well, after spending a whole day with the successful founders of a multi-million-dollar company, I got to learn a lot about them and how to run a business. Hopefully, आपने भी कुछ सीखा होगा. If you did, then don't forget to like this video and also drop in a comment about the best thing that you liked about Rohan and Swati. Finally, now it's time to say goodbye to the Cash Karo family. Hey Swati, hey Rohan. So we are leaving now. Why don't you join us? Oh, we are far from done for today. But thank you so much. It was lovely having you over. Thank you. Bye Cash Karo. Bye, Quality.